And I'm not kidding. I have seen him in so many years and at so many different places. And Terrence, we want to say that we love you and we thank you so much for coming on our show today. It's a pleasure, Michelle. I have known you for a while now. We have a little history connecting us, and it's such a pleasure to, be a part of your panel and be on this talk show. And I hope I can, with this conversation, learn something from you and the questions. And every time I give an interview, I learn a little bit about myself because it makes me think about what I've just said, and it makes me wonder. So thanks for the introspection and every talk brings out something sometimes which I have not probably spoken to myself. So thank you so much. Fantastic. Thank you so much, Terrence. I'm going to get right into my questions because we have less time and I want to ask you so much and I want to learn so much and I want our viewers to absorb as much as they can from this amazing interview today. I can't tell you how excited we've been throughout this week, just waiting to know that we are going to converse with the legend. Okay, so Terrence, my question to you. I just want to say, can you not use such very important big words, because then the weight of it is very, very heavy. I want to be known. Actually, when somebody asked me how would you want to be known, I just say I want to just be disappear. I don't want anyone to remember me anyway. But maybe those who know me can probably just have a smile on their face. But barring that, I don't want these titles like legend and la 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 la. It's too heavy for a person when he's living. When they are dead and gone, it's fine. But when they're living, it's too much of a weight. And then you kind of live with that weight and that responsibility. Because sometimes when you make somebody a legend or somebody a heightened imagination of what you think they are, you think that they're infallible, that they are are not human, almost superhuman. And I think that needs to really that's the fun thing that I've always had a difficult time even in my childhood, because everybody said I was great, and then the onus, my teacher said, oh, you're good in this, you're good in this, you're good in this, you're such a good boy. The problem is that then you get stuck with that. Then you are working to live up to people's images, and they're not allowing yourself to be normal. So I stay clear from that, and it's a warning to everybody else. I think some people may relate to it, especially those who are overachievers. They tend to get a lot of compliments, and what happens is that same compliment becomes a weight, like something around your neck. And it's so important to just be normal, to address yourself as normal. And even though people might say great things about me, in my head I think, my God, I have so much work to do with myself and on myself. And that is that journey that keeps going on. Yeah, I'm just like everybody else who's here in the chat room, just another physical being who's going through life and understanding life. The only thing is that I'm able to use my experiences to address people and talk about things that people probably do not find words. So I give words to people's probably certain relatable experiences, and that's about it. But nothing greater, nothing smaller. We're all the same. There's an echo happening. Use my experiences to, address people and talk about things that people probably do not find words. So I give. Fantastic. So I know, Terrence, I know where you're coming from, and I know how heavy this weight you carry. But even then, all said and done, we still feel so inspired by you and everything that you do and everything that you have achieved. So please accept this. Okay, it's really humility, but I know you're a star, and you have to accept it. Okay, so I'm going to come to my first question, Terrence. There are many who have it in them, to make it big in life, but they often lack the spirit and the determination. So I'd like you, if you could share your journey, your real difficult, arduous journey, and how you've overcome odds and risen, and how do you keep going? See, what has happened to me has happened to me in my youth, and I am a product of who I am from the circumstances I live in. Right? I come from a family. How you overcome odds and risen, and how do you keep going? There's some echo happening. There's some echo happening.
and delay. Has happened to my view. I am a product of who I am, but the circumstances I live in, right? I come from a how to overcome odds and reset and how I overcome odds and reset. I will go out, leave this, and come back because there's some issue with the echo. Yeah. Should we cancel this All and right. start over again? Yeah. I think maybe it's better if you also cancel and start afresh. Maybe there's some problem with the echo. Yeah. Okay. I'll go out, leave, come back. Some issue with the echo. Yeah. Okay. All right. All right. Yeah. So you want to leave now? Okay, I think there is, as usual, our internet is always acting up, even though we try our best, but there's some kind of echo that we're getting here. So we're waiting for Terrence to probably come back because he's finding or seeking some kind of echo there. Okay, guys, we're back. I was asking everybody some questions on Terrence Lewis before he came in. So, should I restart too? Okay, we're trying to get it back, guys. I just hope this internet works really well for us this time. How's the connection now? Yes, I can hear you. Can you hear me? I can hear you. There's no delay too, so I think we're good to go. Okay. Okay, so our audience will tell us if there's a problem, right? You guys are listening to us, right? So let us know through your comments if there's something going wrong. That would be great. Thank you. So yeah, so basically, I think we're a product of our circumstances in many ways, the external and the internal, right? The external world informs the internal world. And then how you perceive it is another thing. So I was born in a family of 8 kids. We came from a very simple middle class family. And I lived in Irla, Andheri, between Parla and Andheri, in a small, like a little chawl. And, my father was a mill worker, my mom was a housewife. And the only thing that my parents kept telling us is that, Baba, please study, please study, please study, because that is the only way you'll get a proper job. Because my father didn't have a normal job, right? He was a worker, he was a mill worker. So he was not educated, nor was my mother. So for them, the only thing was like they had seen their own children, siblings who were educated. Because my parents were the eldest, both my mother and father were the eldest in their family. They realized that they didn't get education, but the ones who were younger who got education, they moved forward. So they said, look at your uncles, look at your aunties, see how they are growing, see how well placed they are. I think that's the only way you will also. We didn't do it, we didn't get it, but you should get it. So they worked very hard, our parents. And academically I was super bright. Like I was a topper in my school. That was never a problem. But I was very interested in sports. I was very interested in all the arts, be it singing, music, elocution, dance. And I also ended up becoming a teacher's pet because I was always putting my hands up for anything. Like I was helping, I was a monitor of the class. So what happens is that's why I was saying that sometimes the weight is too much when everybody says you're amazing, you're so full of life, and you're so enthusiastic. So that was a part of me that and also I was a pleaser. You see, psychologically that was a problem. That became a problem later on in life because and even in childhood, because if you're constantly pleasing your parents, constantly pleasing your teachers, you deny a certain aspect of who you are because you can't always keep everybody happy. I'm not tequila, right? So you can't make everybody happy all the time. So this whole process of always trying to keep everybody else happy,
to the point that you don't know who you are, and then you lose a perspective of yourself. So it's great because you become a charming personality, and it's great to be in the media because people love you and like you. But you need to also claim some amount of who you are. People like me, okay, not everybody is like me, but I'm just saying people like me need to claim some amount of who we are. So that happened maybe from 35 in the last 10 years. I have quite reclaimed who I am. I've gone back to who I should be, and not what I was told to me or what society demanded of me. But going back to my journey, saying, I just say that, in very short, we were 8 children. We had a tough time financially, very tough time. Like, bahut, like, don't go with my shakal or with my how I am right now in the house that I live in. But we saw very bad times, very, very bad times. And I don't want to even think about it. Let's put it that way, that it was hard. Emotionally, it was very hard because we had a very conflicting environment. बाहर का वातावरण सही नहीं था. There was always stress. पानी की तंगी, राशन का तंगी, बहुत झगड़े होते थे. So there was always this emotional turmoil outside. Family was very safe. Mom and dad, rock solid. Family, brothers, sisters, rock solid. I was the youngest, so there it was very safe. But outside, the world was crazy. We had to constantly dodge bullets, in that. It was a landmine outside, because there's to be always some amount of friction for resources, some amount of, consternation happening all the time. Having said that, I grew up in that kind of environment. There was a lot of identity issues also in myself. कि मैं कौन हूँ, मैं actually कौन हूँ और मैं क्या बन रहा हूँ, and मैं एक बंदर की तरह खेल रहा हूँ, सबको हंसा रहा हूँ, मैं सबको entertain कर रहा हूँ. But who am I really? That process came much later. Eventually, fortunately, because I was good in my academics, my parents allowed me very disgrudgingly कि चल तू कर ले, but grades नहीं कम होने चाहिए. I said, okay, ये शर्त लगी कि मैं अपना grades कम नहीं करूँगा, मैं first से भी ज़्यादा लेकर आऊँगा, and I will tell my percentage will be much more than what it was. So my mother was very clear कि studies comes first. So I told her, I'll give you, but don't stop me. जो तुम्हें चाहिए मैं दे दूँगा, okay? लेकिन मुझे रोकना मत, और मैं सुनूंगा भी नहीं. तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ मैं करके रहूंगा. So somewhere my parents realized कि ये बच्चा किसी को सुनने वाला तो नहीं, बहुत stubborn है. और मेरे माँ बाप भी बहुत stubborn है, लेकिन उनके सामने मैं भी बहुत stubborn था. I was probably one of the stubborn kids in my family. And I was always like, अच्छा आप लोग सब लोग तुम लोग ये कर रहे हो तो मैं कुछ और करूंगा. I was always कि नहीं, मुझे वो नहीं करना है जो सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि फिर मैं अलग कैसे दिखूंगा. So there was a huge psychological problem again. कि मैं अलग कैसे बनूं. मेरी पूरी लाइफ में यही था कि मैं अलग कैसे बनूं, मैं दूसरों से हटके कैसे दिखूं. Because that was the thing. That's why sports, that's why all my tryst with lot of arts was simply कि मैं पढ़ाई तो सब लोग करते हैं यार, पढ़ाई में मैं फर्स्ट भी आ गया हूं, लेकिन थोड़ा और करना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए, तभी लोग दिखेंगे, मुझे बोलेंगे हाँ. So this was this whole thing, this need to be different, this need to please, and this sense of wanting to be the best. Like I would not settle for anything less. कि घर में भी अगर मम्मी खाना बनाती थी या कुछ बोलती थी तो वो always she asked me, कैसा लगा तुझे. सर ठीक था, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई यहाँ पे. वो मेरे बचपन से था, और मैं टीचर खेलता रहता था, because I used to love playing a teacher. तो बचपन से वो आदत थी कि सबको सिखाना, सबको पढ़ाना. हालांकि मैं सबसे छोटा था, I was the youngest in my family. But I used to love, इर्द गिर्द हमारे जो लड़कियां थी वो ट्यूशन करते थे, तो मैं वहां पे खेलता था टीचर. मैं चौक और बोर्ड चुराता था. वो एक पार्टी एक स्मॉल सी शीट आती थी, वो मतलब इन द स्मॉल चौक बोर्ड आता था, वो 10 रुपए की तभी, तो वो मंगा के सबको सिखाता था कि ये ऐसा है, ये ऐसा है. So I had the habit of being a teacher right from my childhood, and मैंने अपने दोस्तों को भी बहुत सारा मैथ साइंस सिखाते गया. When I was 17, I started giving math science English tuitions. Yes. तो जिम्मेदारियां थी, अपनी खुद की पढ़ाई मैंने खुद फिनिश कर दी. हमारे घर में सभी जो 8 भाई बहन सभी ने ऐसे ही किया है. ट्यूशन देके सब बच्चों को ट्यूशन देके बिना पैसे कमाए, वो पैसे हम अपने खुद के कॉलेज फीस और सब संभाल देते हैं, कपड़े वपड़े सब. क्योंकि मेरे डैडी ने बहुत क्लियरली बोला था कि 15 साल के बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है. मेरे डैडी ने बोला था कि मुझे 8 साल के अंदर मेरे पिताजी ने बोला था कि यहाँ से निकल के घर जाओ, बम्बई जाओ. हिज फादर, माई ग्रैंडफादर. तो हमारे लिए डैडी बोला कि मैं तुम्हें और 5 साल सिखाता हूँ, पढ़ाता भी हूँ 10वीं तक. उसके बाद तुम्हें कॉलेज करना है नहीं करना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी. मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई. एंड माय डैड वाज बिंदास, जो बोलते थे वो वही बोलते थे बस. और मेरी माँ ने भी बोला था कि बस तुम्हें अपना संभालना है, अभी तुम घर से निकलो यहाँ से और कमाओ,
और जियो जिंदगी जियो. So it was a good vibe. That it was nice. So we were allowed, we were given the freedom कि चलो करो, अपने पैरों पर पहले से खड़ा करना था. एंड इट वॉज ओके फॉर मी बिकॉज मेरे साथ भाई बहन भी वही कर रहे थे, ट्यूशन दे रहे थे, सिखा रहे थे सबको, कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो इट वॉज नेचुरल फॉर मी टू डू द सेम थिंग. फिर मैं डांस सिखाना मैं शुरू कर दिया. आई एक ऑफर आया कि अरे तू डांस अच्छा करता है, चर्च में भी तो अच्छा डांस नाचता है, कॉलेज में भी तो अच्छा नाचा है, तो इतनी सारी प्राइजेस जीत के आता है. तो एक ट्यूशन के बच्चे, थोड़े अमीर गुजराती पेरेंट्स थे अंधेरी में, उनको बच्चों को सिखाना था, और थोड़े अमीर थे वो, तो उन्होंने कि हाँ तुम आके घर पे सिखा दो. तो मैंने सिखा दिया, वो कंपटीशन में जीत गया. तो फिर उसकी माँ ने बोले कि चलो आप अभी आपको मेरे बच्चों को सिखाते रहना, आप बहुत अच्छे हो, आपका असर बहुत अच्छा रहा है, बच्चे थोड़ा बहुत एक्साइटेड होते हैं आपको देखकर, मतलब वो चाहते हैं कि आपसे सीखे, वो रुकते हैं आपके लिए. तो और आप बहुत स्ट्रिक्ट भी हो. आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. तो वो अच्छी बात है, थोड़ी डिसिप्लिन हो जाएगी थोड़ी. और उनके 2 बच्चे थोड़े मोटे थे ना, थेपला और घी खा के थोड़े मोटे थे, और मैं इतना सुकड़ा कांडी था. तो तुम्हारे जैसे बनना चाहिए वो. ठीक है, मैं सिखा दूंगा. 2 लड़कियां भी थी. तो ऐसे करके बिल्डिंग के बच्चों को मैंने सिखाना शुरू कर दिया. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. एंड इट वाज वेरी स्ट्रेंज. मैंने कभी सीखा नहीं था. मुझे डांसिंग सिंगिंग का बस देखता था, और मैं अगर मुझे कुछ चीज पसंद आ गई ना, तो मैं उसको देख देख कर मैं सीख रहा था. आई वॉज लाइक दैट. आई वॉज लाइक, जो मुझे अगर मुझे मेरे सामने अगर 2 दिन के लिए कोई रखो मेरे सामने, और वो कुछ अच्छा करता हो, रियली स्मार्ट हो, मैं घूरता रहूंगा उसको, और फिर मैं समझ जाऊंगा कि वो कैसे कर रहा है. सो दैट इज बीन ऑलवेज माई थिंग. तो मैंने अपने आप से सीखा है, मैंने कुछ सीखा नहीं है. बहुत 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 मतलब आई वॉज व्हेन आई वाज 26 आई वेंट एंड लर्न डांस. बट बिफोर दैट आई नेवर न्यू. आई वाज ऑलरेडी टीचिंग. तो आई वाज डूइंग माय कॉलेज, आई डिड होटल मैनेजमेंट, आई डिड माइक्रोबायो बायोकेमिस्ट्री. फिर मेरी जर्नी शुरू हुई. फिर मैंने अपना एक एकेडमी खोला. फिर वहाँ पे कोई बच्चे आए नहीं. फिर मैं फिटनेस में चला गया. फिर वहाँ पे मेरी मुलाकात बड़े बड़े हस्तियों से हुई. माधुरी दीक्षित, ऐसे ही तुक्का. कुछ लोग मेरे उनके इर्द गिर्द थे. जूहू में बहुत पॉपुलर हो गया था as the only male fitness instructor उस टाइम पे. like what was Zumba at that time, I had created Bollywood cardio workout. तो वो बहुत फेमस हो गया मेरा बॉलीवुड कार्डियो वर्कआउट. तो वो फेमस होने की वजह से बहुत लोग मेरे साथ फिटनेस, वेट लॉस करने के लिए आते थे. गौरी खान थी, मलाइका थी, बिपाशा थी, बहुत सारे बड़े फिल्म स्टार्स आते थे, उनकी बीवियां आती थी, आमिर खान की बीवी. तो ऐसे कर करके मेरी पहचान इंडस्ट्री में हो गई. बट मैंने कभी काम नहीं मांगा कि मुझे फिल्म कोरियोग्राफर बनना है, क्योंकि मुझे लगता कि मैं नहीं बन पाऊंगा. मेरे सपने बहुत छोटे थे. आई नेवर हैड बिग ड्रीम्स. मेरा था हाँ मुझे अपने पैरों पे खड़ा है. अभी मेरी अब मैं कमा रहा हूँ 5,000, अभी 10,000, 10,000 से 20,000. वेरी वेरी स्मॉल ड्रीम्स. मैंने बड़े सपने देखे ही नहीं. तो इसलिए मेरी जो जर्नी है बहुत लंबी रही है. बिकॉज मैंने बड़े बड़े सपने नहीं देखे. कोई था नहीं सामने के बोलो कि अच्छा देखूं, और अगर देखूं तो मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं ऐसा बन सकूं. आई वॉज लाइक, मैं जहां से आता हूँ मेरे पास इतनी कैपेबिलिटीज है, मैं थोड़ा थोड़ा करके करूंगा. और मुझे में एक और चीज थी जो मैं मांग नहीं सकता. मैं किसी से मांग नहीं सकता कि मुझे काम चाहिए. सब काम जो मेरे लाइफ में आया है वो अपने आप आया है. सामने से लड़का, किसी मेरे दोस्त ने बोला कि यहाँ पे डांस सिखा दे. सामने ट्यूशन वाले बोले कि यार तू, मेरे प्रिंसिपल ने बोला कि तू 10वीं में अभी इतना परसेंटेज लेके आया, चल मैं तेको ट्यूशन दिलाता हूँ, तुझे पैसे चाहिए ना, ट्यूशन दिलाता हूँ. तो फॉर्चुनेटली फॉर मी द यूनिवर्स हैज बीन अबंडेंट. और जो मुझे चाहिए था वो कहीं ना कहीं लोगों से मुझे मिल जाता था. लोग आते थे, बोलते कि अच्छा तू ऐसा अच्छा करता है. तो मेरे खुद के बड़े सपने नहीं थे, ये मैं मानूंगा. और दूसरी चीज ये कहूंगा कि आई हैड अ प्रॉब्लम कि मेरे थोड़ा अहंकार, थोड़ा मेरी माँ की तरह थोड़ा अहंकार था, कि मैं सामने से जाके पूछ रहा था कि मुझे काम दे. जैसे माधुरी दीक्षित मेरे से 20 साल पहले फिटनेस के लिए मतलब मेरे से सीखती थी रोज. बट आई नेवर हैड द करेज टू से can you give me a chance to choreograph your film. Same with Gauri, same with Amir Khan's first wife रीना दत्ता. वो खुद सामने आके बोले कि अच्छा लगान की पिक्चर मैंने हम लोग चालू करना है, एक गाना है तुम कर लोगे. मेरा नहीं मुझे लगता नहीं है. तब भी मैं डरा हुआ था. सो आई डिडंट हैव दैट मच सेल्फ कॉन्फिडेंस. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. थोड़े थोड़ा करके बनते गया. थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद सागर बनता है. तो मेरी जर्नी मतलब 20 साल. When I came into TV, I was doing then, I had already learned, I collected all my money, then gone to America, came back, got my scholarship, came back, set up my institute. Then I had my first opportunity in television because a lot of people had heard me कि मैं shows करता हूँ. Shows भी मेरे एक दोस्त, वनीता और उमंग कुमार, they were the first ones. They are the set designers.
वो शोज करते थे, डिजाइन करते थे, उन्होंने मेरा नाम दिया था कि ये मेरा हमारा दोस्त है, ये अच्छा कोरियोग्राफ करता है। तो किसी को मेंशन किया था और उनको सस्ते में मिल गया। मैं बहुत सस्ता था तभी। इट वाज लाइक मैंने बहुत तुक्का, मैं कुछ 25,000 मैंने मांगे थे पूरे कोरियोग्राफी के, पूरे शो के, और 10 डांसर्स सब। सो इट वाज अ वेरी हम्बल बिगिनिंग्स, यू नो। एंड देन थोड़ा सा करते फिर जैकपॉट लग गया टीवी के साथ। मैं सब लोगों को कहता था मुझे 20 साल लगे, यू नो, टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। फिर उसके बाद, यू नो, मैंने मेहनत की। जब मुझे मौका मिला टीवी पे आने का, तो मेरी हिंदी बहुत बहुत खराब थी। मतलब मैंने हिंदी सीखी थी, यू नो, स्कूल में मैं बहुत अच्छा था हिंदी में। मेरी हिंदी जो स्कूल में थी बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लेता था। लेकिन कॉलेज जब गया तो सिर्फ इंग्लिश 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 इंग्लिश। सो बाय द टाइम आई वेंट टू टीवी, इट वाज एटलीस्ट 20 ईयर्स तक मैंने हिंदी बोला ही नहीं था किसी से। और मैं बचपन से हिंदी बोलते आ रहा हूँ, बिकॉज आई वाज लिविंग इन अ बस्ती, नो। सो हिंदी तो हम लोग बोलते रहते थे, यू नो, बट इट वाज बम्बैया हिंदी, नॉट द गुड हिंदी। फिर जब टीवी पे आने के बाद मुझे पता चला कि यार मेरी इतना पड़ा, तो फिर मैंने हिंदी के पुस्तक मांगे, निबंध मांगा, निबंध सीखने लगा। फिर हिंदी के न्यूज़पेपर्स पढ़ने लगा, बैक टू स्टार्ट टू फिनिश। और ऐसे करते करते सुधारा अपने आप को। एज अ जज आई रियलाइज आई नीड टू हैव अ पर्सनालिटी। मैंने बहुत कुछ, मुझे पता नहीं था। मैं आड़े टेढ़े कपड़े पहनता था, मेरे हेयर स्टाइल अलग अलग थे, कोई कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा समझते गया। लोग जो मजाक करते थे, मैंने सोचा कि हाँ, लोग मजाक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कटाक्ष मार रहे हैं, थोड़ा व्यंग कर रहे हैं, शायद मैं सही नहीं हूँ, मुझे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपने आप को बना दिया जो बनने, और अभी भी बन रहा हूँ। अभी भी मैं सीख रहा हूँ। Thank you, Terence. Thank you so much. I'm sure we are all inspired with your journey, and there's so much to learn. There's so much to take away from it. Thank you so much, Terence. I want to ask you. You're an artist, and this virus has impacted the entire industry. So, everyone's out of work. Musicians, performers. How would you encourage these artists not to really sit and sulk, but work hard and work towards the future? I mean, is there something that you can tell us, everyone who's really like lost everything in this pandemic? जो आर्टिस्ट है ना, उनकी परिस्थिति बहुत ही बिगड़ी हुई है। सो इट्स नॉट इजी। मैं खुद कहूंगा कि मेरे इंस्टीट्यूट को भी खड़ा करने में ऑनलाइन मेरी मेरी जान चली गई। एक था कि चलो इंस्टीट्यूट को बंद कर दूं, क्योंकि वैसे भी उतने पैसे तो बनते नहीं है, क्योंकि यू नो दैट इन इंस्टीट्यूट वी नॉट मनी मेकिंग काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूट। तो वो मेरा पैशन था कि मैंने 20-25 साल लगा दिए, तो मैं इसको बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छे पैसे मिल जाते हैं टीवी से, मेरे जजिंग शो से, बिकॉज ऑफ माई सेलिब्रिटी स्टेटस जो भी है, उससे मुझे अच्छा पैसा मिल जाता है। तो मुझे कोई जरूरत नहीं है मुझे इंस्टीट्यूट खड़ा करने के लिए। इनफैक्ट इट वाज अ गुड एक्सक्यूज टू क्लोज इट डाउन, क्योंकि इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। लेकिन मुझे मजा आता है, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो बहुत मेहनत मेहनत करते हैं। मेरी जो पार्टनर है मारूक, और जो मेरी को टीम वाले हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि मैं बंद कर दूं, तो उनका क्या होगा? तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, अभी ये तो क्लासेस तो लोग आने वाले नहीं है। ऑन ग्राउंड क्लासेस जो हमारी, इट वाज अ, क्या है कि मुझे कोई पैसा नहीं मिलता था इंस्टीट्यूट में, लेकिन जो भी पैसा आता था, जो लोग काम कर रहे हैं, उनका घर चलता था। तो अब इसके पैंडेमिक की वजह से लोग आने वाले नहीं है, उतने फीस देने वाले नहीं है। तो हमारी फीस प्रीमियम फीस थी, क्योंकि वी वर टीचिंग ओनली प्रोफेशनल्स। तो फिर मैंने बोला कि चलो इसको कैसे अभी खड़ा कर देते हैं फिर से ऑनलाइन। तो ये बहुत सोच थी कि हार मानूं या अपने विचार बदलूं, और किसी न किसी तरीके से इसको फिर से अपने पैरों पे खड़ा कर दूं। तो ये जिम्मेदारी थी, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था। ये दुविधा में थे कि क्या करें। अगर हम बंद करते हैं तो मेरे लिए आसान होगा, मेरी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी, मुझे और टाइम मिल जाएगा, मैं खुश रहूंगा, और मैं कुछ और चीजें करते रहूंगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ चीजें हैं जो जिस पे मैं अमल कर सकता हूँ, वक्त दे सकता हूँ। लेकिन ये मेरी खुदगर्जी होगी, ये मेरी खुददारी, मतलब बोलता ना मैं, सेल्फिशनेस होगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा मेरे जो साथ जो जुड़े हुए हैं, उनका क्या होगा फिर। So then I said, let's figure out a way to find a system where we can support each other. So फिर मैंने देखा कि जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज है, उनको बंद करना पड़ेगा। We'll have to start smaller courses where anybody can dance for fun, for happiness. Opportunity अभी क्या है कि मार्केट ऐसा है कि
we'll have to see a broad market. लोग dance प्यार, because you want to become dancers, वो कम होगा, but we will need to approach dance for your happiness, because ये जो नकारात्मकता की जो लहर चढ़ रही है और जो सबके अंदर अपने जहन में घोल रही है, it is becoming very poisonous. So mental health is going to become a big problem, and therefore dance is a very good antidote for mental health. So if we approach it from that perspective and figure out courses that can help people stay happy, people who don't know how to dance, if they can just learn to dance a few things, few steps, keep it so simple that anybody can dance, so that they can remain happy through dance. Fitness का fitness हो जाएगा, खुशी की खुशी मिल जाएगी, और एक skill मिल जाएगा. तो एक एक goodness, एक accomplishment हो जाती है. But the course has to be very simple. हमारे courses बहुत difficult थे, तो एकदम simple कर दिया. तो पूरा कोर्स को चेंज कर दिया, तो बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया. एंड वी केप्ट सम कोर्सेज ओनली फॉर लाइक थोड़े जो प्रोफेशनल्स जो हैं उनको भी रखा है, एंड एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट. इतना सस्ता कर दिया है कि एनीबॉडी कैन डांस. सो दैट इज द वे यू गॉट टू अप्रोच. अभी मैं सबको आंसर्स नहीं दे सकता हूँ. जो डांसर्स थे, जो परफॉर्मर्स थे, जो बॉलीवुड के इंडस्ट्री वाले थे, उनका अभी बिजनेस ठप हो गया है. जो बॉलीवुड वाले डांसर्स थे ना, बैकग्राउंड डांसर्स, अभी कोई शूट नहीं कर रहा, तो काम थोड़ा बहुत मुश्किल है उनके लिए. तो मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इंसान ऐसा है कि हर परिस्थितियों से जूझ कर वो उठकर आएगा. और कभी कभी ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज पैदा करते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी कभी कभी एक ऐसे चीजें हमें नजर आते हैं जैसे जो हम कभी नहीं सोच पाते, चाहे अगर वो परिस्थिति नहीं होती. So I always see there's an opportunity in adversity. I always believe कि कभी कभी थोड़ा 2 कदम पीछे हम चल जाते हैं ताकि हम एक बड़ा छलांग मार सकते हैं. जैसे एक शेर भी कभी कभी takes 2 steps back. Yes, ये जो आपड़ा है, ये जो आपत्ति आई है, this pandemic is difficult for many people, and immediate solutions नहीं है. अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सब कुछ, मुझे सब पता है, मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैं बहुत ही मूर्ख हूँ अगर मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है. I don't have all the solutions, or we'll have to kind of slowly put it together. There are no easy answers, there are no shortcuts, but I think we'll have to try and we'll have to figure it out. Absolutely. Okay, thank you so much for that, Terrence. I'm going straight into my next question. Tell us about choreography and dancing. There are many children who love to dance and are great at it. But do you think there is a career in a country like ours? Is there a scope for children to pursue dancing and make a career out of it? How does one take into performing arts and really become use dancing for their skills or their careers and pursue it? See, अगर आपने मुझे 4 महीने पहले ये सवाल पूछा होता तो I would have given you a very different answer. अब मैं झूठ नहीं बोल सकता. अब डिफिकल्ट सिचुएशन है, अब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है. आई कांट गिव यू दिस आंसर राइट नाउ, बिकॉज अगर मैं कहूँ कि यार क्या फ्यूचर है, मैं झूठ बोल रहा हूँ. मैं झूठ बोल रहा हूँ, एंड आई डू नॉट वांट टू किसी को बहकाना नहीं चाहता हूँ. बड़ा रिस्क है इस इंडस्ट्री में. कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, अभी बहुत बड़ा रिस्क है. मार्केट्स आर वेरी अनस्टेबल, इकोनॉमी इज अनस्टेबल. तो जब तक आप डांस को उस लेवल तक नहीं लेकर आते हो जहां पर वो जरूरी होता है एक आम इंसान के लिए, अगर वो लेवल पे आप कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री में उतरते हो जहां पे डांस बिकम्स एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जस्ट टू बी सेन, जस्ट टू कीप योर मेंटल हेल्थ, उस हद तक मैं समझता हूं वो बड़ा इंडस्ट्री है. दैट इज अ बिग इंडस्ट्री, बिकॉज एवरीबडी इज राइट नाउ गोइंग ऑनलाइन, राइट? तो नेगेटिविटी कम हो गई है, तो नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ गई है. एंड डांस कैन मेक यू हैप्पी, but dance will have to be simple, so which means even an uncle who used to go to office and never dance, now it has to become compulsory that he gets up, stretches his body and dances, because and it should be such a level, no, not like मतलब ये step है वो step है. It should be a dance class कि चलो आओ और नाचो, body free करो, म्यूजिक चला रहा हूँ. And it should be more like a coach. It shouldn't be like अरे ये step है, ये step है, ये step है.
then it becomes too overwhelming. They need to do online classes where people can just come and free dance. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ऐसे वाले ज्यादा बेटर, बिकॉज वहां पे द अपॉर्चुनिटी इज मोर, डिमांड इज मोर. स्पेशलाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होगी. जो जैसे मैं स्पेशलाइजेशन कोर्स एज इन माय इंस्टीट्यूट वाज वेरी फेमस, वी वर द बेस्ट फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन डांस. हमारी नंबर 1 इंस्टीट्यूट थी, राइट? और उस तरीके के हमारे टीचर्स भी थे. So right now my teachers, all my teachers who are teaching very high level are now teaching itna basic, but this is also important so that they can survive. That's how it goes. So I will just say ये सही टाइम नहीं है कोई जवाब देने का, चाहे इस इंडस्ट्री का हो या मोस्ट इंडस्ट्रीज. हाँ, ऑनलाइन वाली इंडस्ट्रीज ज्यादा. If you're saying Netflix, if you're saying Amazon, if you're saying those industries, वो नोट छाप रहे हैं. If you're saying YouTube, social media, छाप रहे हैं. Okay. And unless we find a way where people can also pay for performers, not just teaching but performing. There are a lot of people who are not good teachers. Everybody cannot teach. Some people are just great dancers. और वो अच्छे teachers नहीं बनते, वो बहुत घटिया teachers बनते हैं. Because they don't know how to teach. उनकी कोई गलती नहीं है, बट दे आर अमेजिंग परफॉर्मर्स. बट क्या लोग पैसे देंगे? फ्री में सब वॉच करते हैं यार, लेकिन क्या पैसे लोग देंगे टू गो एंड वॉच हिम परफॉर्मिंग लाइव फ्रॉम होम? तो ये सब सवाल अभी इसका आंसर्स नहीं है. अभी देखते हैं क्या होता है. Sure. Okay. No problem. Another question coming right up to you. You eat to live and not the other way around. But during this lockdown, it is so difficult. Everyone's binge eating. Everyone's just eating to get out of stress. So how is it that you conquer that monster within you and you stay so fit and so toned and so amazing at this age and during this time? What is it that keeps you going with food? मिशेल, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि मेरा वेट लॉस हुआ है इस पैंडेमिक में. देखिए, मेरा कोई विल पावर भी नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, मेरी कोई मेहनत ही नहीं है. बिकॉज मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं अगर जिम ना जाऊँ तो मेरा वेट लॉस हो जाता है. मेरा उल्टा होता है. आई हैव टू गो टू द जिम टू मेंटेन माई वेट. तो कुछ लोग होते हैं ना, अंदर से हम आग बहुत ज्यादा है. हम 5 तत्वों से बनते हैं. मेरा बहुत मजाक उड़ाता हूँ जब भी मैं ये बोलता हूँ कि हम सभी इंसान 5 तत्व से बनते हैं: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और अंतरिक्ष. तो हर एक में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं. मेरे में आग बहुत ज्यादा है. तो मैं सांस लेता हूँ तो मेरा पता नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ऑनेस्टली आई डोंट नो. बिकॉज कुछ लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन अलग होती है ना. तो आई थिंक और प्लस मुझे खाने में इंटरेस्ट नहीं है. मैं शाम को कभी कभी खाली ब्रोकली, एक आलू स्वीट पोटैटो खा लिया, मोमोज जो ऑलरेडी पैक्ड है वो थोड़ा स्टीमर में डाल के खा लिया. बस उतना काफी है मेरे लिए. और लंच मेरा पैक्ड आ जाता है. एक अंकल मेरे लिए खाना बनाते हैं, उनके पूरा परिवार खाना बनाता है. तो मैंने बोला कि अंकल मेरे लिए भी बना दो एक एक्स्ट्रा पोर्शन, मैं आपको पैसे दे दूंगा. तुमको घर का खाना मिल जाता है. बिकॉज कौन बनाएगा एक जन के लिए खाना? इट्स स्टूपिड टू मेक फूड फॉर योरसेल्फ, वन पर्सन. सो आई गेट न्यूट्रिशियस हेल्दी मलयाली फूड. सो आई एम वेरी हैप्पी. और मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ, तो आई डोंट हैव ब्रेकफास्ट. सो आई जस्ट हैव डिनर एट 8:30 एंड देन स्ट्रेट एट 12:30. तो वो भी मैंने चालू कर दिया, क्योंकि मैंने सदगुरु की बात सुनी थी कि उसने बोला कि अगर 16 घंटे फास्टिंग करते हो तो अंदर के जो भी कीड़े हैं, जो भी मतलब बैक्टीरिया है, जो भी ऑल द टॉक्सिन्स गेट कम आउट. तो हफ्ते में 3 या 4 बार अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो जो टॉक्सिन्स है बॉडी के वो ऑटोमेटिक निकल जाते हैं. तो आपको विटामिन ये वगैरह वगैरह नहीं लेने की जरूरत है, टैबलेट्स जो सप्लीमेंट. You can just be take little things and you'll be fine. तो मैंने वो चालू कर दिया, तो उसका भी बेनिफिट मिल गया. So I think but I would just say for a lot of people who I have been a fitness trainer for, and those who are foodies, you will just need to make a decision. You'll have to make a decision not to stay hungry, but to eat wisely. ये बहुत important है कि आप क्या खाते हो. पेट भर के खाओ.
बट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू नो कि अपनी जबान के लिए और अपने दिमाग के लिए मत खाओ, अपनी पेट की सुनो. Get in touch with your tune yourself to how you feel when you eat something. Start sending listening to your body. Your body will tell you how much food you need and what kind of food you need, whether you want to be veg. Now I'm vegetarian, but some people want to eat meat, so your body will tell you whether you feel happy with meat or not, and don't listen to your mind and to the culture and to your tongue, because ये धोखा दे देती है. Okay, अपनी इंद्रियों की जो शक्ति है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, बिकॉज ओवर इन्फॉर्मेशन हो जाता है और ये दिमाग ड्रामा करने लगता है. एक चीज जो अच्छी है उसको बहुत अच्छा बना देता है. सो कट द ड्रामा. Don't listen to your senses, because tongue is the sensory and your nose is a sensory for, and your eyes also. Listen to your stomach. Listen to the feed, to the information from the body to your mind, and you will realize कि मैं बहुत ज्यादा खा रहा हूँ या मुझे ये नहीं खाना चाहिए, ये इससे मैं बहुत लेजी फील करता हूँ. Listen to the concept कि food should energize you. खाना खाने के बाद एक एनर्जी आनी चाहिए. अगर आलस आ रही है, इसका मतलब आपने बहुत ज्यादा खाया है या आपने गलत चीज खाई है. तो हैव फूड दैट कैन एनर्जाइज यू, दैट कैन मेक यू फील वाओ, मजा आ रहा है. तो वो इंफॉर्मेशन मैं नहीं बता सकता आपको. हर एक इंसान अपने खुद, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन इनर डायलॉग. तो you decide for yourself. True. Cool. Thank you for that, Terrence. Thank you for that tip. Really valuable. I'm going to ask you another question. With success and wealth comes pride and bearings. How do you manage to stay so humble and connected to your roots despite all the paraphernalia in your life? So, I have a problem. I don't believe what people tell me. You don't believe what people tell you? No. I've always been like this. Like, कभी कभी मेरी माँ भी परेशान हो जाती थी, यार तू खुश क्यों नहीं होता, लोग तुझे बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा है तू ऐसा नहीं ना. माँ, वो क्या है ना कि मुझे लगा कि मैंने अच्छा नहीं किया और मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया, मैं यहाँ इससे भी अच्छा कर सकता था. सो माई इनर क्रिटिक इज थोड़ा ज्यादा है. वो माई इनर क्रिटिक टेल्स मी यू आर not good enough, like not like I am, psychologically I feel I'm fine. I'm just saying that in any skill or anything I always see कि हाँ ठीक है, इतना भी अच्छा तूने नहीं किया, हाँ ज्यादा झाड़ पे मत चढ़. और मेरी फैमिली भी ऐसी है ना कि वो ज्यादा भाव नहीं देते मेरे को. और मेरी फैमिली, हमारे 8 भाई बहन है, सोचो. वो कभी वो बोलते नहीं है कि यार तूने क्या कर दिया यार, कभी नहीं बोलते. मेरी माँ ने भी कभी ऐसा बोला नहीं कि मैंने कितने सारे प्राइजेस जीते हैं स्कूल में, एक बार भी मेरी माँ ने कभी नहीं कहा वाह मेरा बेटा कितना अच्छा है. ना ही मैंने सुना है मेरी माँ को बोलते हुए किसी और को मेरा बेटा कितना अच्छा है. नॉट फॉर मी. मेरे दूसरे भाई बहन भी बहुत स्मार्ट हैं, कभी नहीं कहा है. तो हमारे परिवार में ये डिफॉल्ट प्रॉब्लम है. हम अपने आप को ज्यादा समझते ही नहीं है और ना ही किसी को भाव देते हैं. लेकिन जिसकी मतलब जब हम लोग बैठते ना घर में सामने, तो मतलब कटाक्ष मारना या व्यंग करना या किसी की मतलब मजाक करने में हम लोग नंबर 1 है एक दूसरे के. तो माय फैमिली ग्राउंड्स मी, and I'll be very very honest, I genuinely don't think too much about myself. I only I'm able to see what I'm not good at. What I'm good at, I'm thinking हाँ उसमें तो क्या करना है, उसमें तो ज्यादा ध्यान नहीं देना है, वो हो गया. You see, this is a problem with people who are overachievers. When you're an overachiever, you always feel that you have not achieved. So no matter how much you and I'm not talking about money. Money is not a big thing for me. I've never been so crazy about money. But I always feel कि मुझे और improve करना है, मुझे और अपने आप को सुधारना है. यहाँ पर मैंने यार ये थोड़ा मैं मार खा गया यार. Even when I'm judging now, I'll tell you after when I see some of my episodes, I say यार तूने यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं बोला, थोड़ा और अच्छा बोलते, थोड़ा और explain करते, थोड़ा और समझाते. So my inner voice is always wanting to be better.
तो जब ये बात चल रही है ना कि लोग क्या बोल रहे हैं, अगर लोग बोले भी ना, तो मैं समझता हूँ कि यार तुम्हें तो पता ही नहीं कि क्या लेवल होनी चाहिए। आई एम ऑलवेज सेइंग कि हाँ, तुम अपने लेवल से बोल रहे हो, तुम यू नो यू आर relatively successful, no? If you surround yourself with people who who are not achieved, who have not achieved much, or who are not living a very high standard, for them you are god. But if you put yourself amongst people who are genius, then you feel no, you are not great. So my thinking is always कि अगर कोई genius, अगर जिसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जो बहुत ही काबिल है, ओके, उस क्षेत्र में अगर उसने मुझे कुछ बोला, देन आई वुड से हाँ ठीक है। फिर भी मैं एक्चुअली ऑनेस्टली वहां भी बोलता कि ना, तुमने गलत बोला है, यू नो, तुमने मेरी एक भूल देखी नहीं, वहां पे मैंने एक मिस्टेक किया था, तुम पकड़े नहीं। तो आई हैव अ वेरी ओवर क्रिटिकिंग माइंड, so you have to be very careful when even my friends they come, no, they're like, boss तू कितना तू मतलब इतना क्यों सोचता है? I said no, it's just me, it's just I can immediately, you know, because I think when I was being a teacher, for me also I had to always look at people. Nobody taught me anything, like, you know, it was always कि मैं देखूं वो क्या कर रहे हैं और इसको मैं कैसे एनालाइज करके कैसे सीखूं. So my brain has always been like, okay, somebody is doing something very well. वो कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, उसका ब्रेकडाउन क्या है, वो कैसे बात कर रहा है, क्या अप्रोच था उसका. So my brain is constantly learning. So when you're learning, you always feel there is room for more. So I guess in my head, not that I don't appreciate people who love me. I love the love they give me, and I feel very happy, and it comforts me, and it's nice. And I'm thankful to all the hearts, and I'm thankful to all the smileys. I appreciate that from the outside, but I do not appreciate myself too much in my own head. Wow, that's great. Terence, I want to tell you that in the next 5 minutes, Insta is going to log us off. I have two more questions for you. So So we can do a we quick log round. in Okay, or cool. can we just go quick? Yeah, go quick. Yeah, let's go quick. My next question: are you spiritual, Terence? And what gives you the force? So I have yes, I am very spiritual. I'm non-religious. I'm agnostic. I'm definitely Hindu because I feel Hindu is a culture. So I'm born from this country, so I'm very proudly Hindu. Hinduism is not a religion; it's a culture. So I'm culturally Hindu, and I follow the Vedic principles a lot because I feel they are a way of life. They are not religious. It's very no. Vedanta is a very non-religious way of living, and this is something I'm very proud of. I love all religions. I love the goodness and the certain rituals that come with all religions. There are lots of beautiful small rituals that are there in every religion. I love the way Muslims pray. Their way of praying is beautiful, amazing. I love the silence. I love the way, they do the sajda. It's just beautiful. I love the way, the certain rituals of Hinduism. I love the philosophies of Buddhism and, Christianity. And also, I love, the Sikhism way of life also. So there's a lot to learn. The Kabbalah is beautiful also in its own way. So I've studied some amazing rituals that have been created by amazing people. But I'm not, I just feel that I don't want to be put in a box that I am this. I am that and I'm not. So that is the paradox for me. And all I will say is that my spiritual process is all about, finding the good in people. Finding the good in people, understanding the bad in people. Find the good in people and understanding the bad in people, why they are the way they are and why they are who they are, and understanding the what makes them who they are. My spirituality is also a practice of meditation where I use at least 10 minutes to half an hour with myself just to
ask myself, how authentic was I? How honest was I? How truthful was I to myself? Did I make somebody laugh? Did I make somebody smile? Was my purpose of living today only for myself, or did I give something to somebody that made them feel alive? You know, um, I think for me, the whole idea is to be a full human being and a human being with full potential. And I am not right now. So my journey is to realize myself as a full potential. You know, Great. how can I grow into the most amazing version of myself that allows me to share that version with the world? And I'm always curious, and I want to remain curious about life and you know love, and Mm. understand the paradoxes of destiny and karma and dreams, and why do they happen, and why are we the way we are, and what makes us passionate, what makes us do certain things that are so stupid about us. There are so many things I have not discovered and understood about life. I am such a seeker in that sense, and I'm so fascinated, and I feel there's so much of aliveness, there's so much joy in life, uh, and of course I see the sadness too, and I see the sadness, and I say, why is that happening, and you know what must be the pain, and what is the logic of this universe, and how does it all come together, and what are these polarities? Why is there so much of grief, and why is there so much of beauty at the same time? How do they Even coexist? sorry to